क्यूब रूट ट्रिक. व्हाट इज दैट? इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है. नॉर्मली क्या करते हैं, इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद 3 के ग्रुप्स बनाएंगे प्राइम नंबर्स का. उस ग्रुप में 3 के ग्रुप में से एक नंबर उठाएंगे, उन सबका प्रोडक्ट करेंगे, देन यू विल गेट द क्यूब रूट. वेरी टाइम कंज्यूमिंग. नाउ इट इज नॉट नेसेसरी टू डू दैट. वी कैन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर विद इन सेकेंड्स. व्हाट इज दैट? इसके लिए प्री रिक्वायरमेंट है आपको एटलीस्ट 15 तक का क्यूब्स याद होना चाहिए. इतना तो याद कर सकते हैं और इतना आई थिंक सब स्टूडेंट्स को पता ही होता है 15 तक का क्यूब. इसको यूज करके हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे. हाउ विल वी डू दैट? सी, सिंस वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट, सेपरेट द लास्ट 3 डिजिट्स. ये लास्ट के 3 डिजिट्स हमें क्यूब रूट के यूनिट डिजिट देंगे. वो कैसे? दिस नंबर ends in the last 3 digits. See, the last digit is 2. अब आप इस ग्रुप में चेक करो किस नंबर का क्यूब 2 में एंड होता है. 8 का क्यूब 512 वो 2 में एंड होता है, और कोई नंबर का क्यूब 2 में खत्म नहीं होता. The ones digit of the cube of 8, it is 2. So that means the ones digit of the cube root will be 8. हमारे आंसर का ones digit हमें मिल गया है, that will be 8. अब हमें चाहिए उसके पीछे कितने डिजिट्स हैं. For that, check the remaining digits. It is 474. 474 किन किन क्यूब्स के बीच में आता है? See, 474 343 से बड़ा है, 512 से छोटा है. इन दोनों के बीच में आता है, which means 7 और 8 के क्यूब्स के बीच में आता है. 474 comes in between the cubes of 7 and 8. हमें छोटा वाले लेना है. So 7 is the remaining digit. That means this number is the cube of 78, or the cube root of this number is 78. I hope you understood. See, we will do one more question. Separate the last 3 digits. Again, the last digit is 2, which means exactly like this. The last digit, that means the unit digit of the cube root will be 8 here also. Okay, you will write here the cube roots. Ones digit of the cube root will be 8. Now the remaining digits are 2097. 2097. Look, 2097 comes between 1728 and 2197. 2097 comes between 1728 and 2197, which means between the cubes of 12 and 13. And again we need the smaller one. So 12. The remaining digits are 12, which means the cube root of this number is 128, or 128 cube is this bigger number. So if you understood this concept, what will be the answer of this question? Please comment.